हेलो स्टूडेंट्स, ये जो है क्वेश्चंस दिया था मैंने xt वर्सेस t का प्लॉट दिया था एंड वी नीडेड टू फाइंड आउट x of t plus 2. Okay, and I think you have tried it. I am giving you the solutions. If you have not tried it, you can see this and it will help you. So basically when we see xt has four regions of discussion. First region is when t is less than when t is less than minus 2, then when t is between minus 2 and minus 1, when t is between minus 1 and 0, and when t is greater than 0. तो इन चार में इसके चार तरीके के बिहेवियर है इन चार रीजन में. इस रीजन में क्या है, इसका xt is 0, इस रीजन में भी xt is 0. This region xt is 0, xt is 0 here, xt is 0 here. Here it follows the line, this is the line, and in this region it is constant. Okay, so by visualizing it we can know that what is xt. Xt is any mathematician will write this xt as this expression. Okay, what will be that expression? It is 0 when t is less than minus 2. It is line, you will be finding out line also, but what is that line? Yearly line. Okay, when t is in between minus 2 and minus 1. And it is having a constant value 1 when it is between minus 1 and 0, and again it goes to 0 when t is greater than 0. So these are the 4 points of discussion. Okay, so here it is defined, xt is defined, here it is xt is defined, here is also xt is defined, and xt needed to be defined in between in this region when t is between minus 2 and minus 1. So as I said, it is basically a line. This is the line, and we can find out the equation of line by using 2-point equation. Line की 2-point equation. क्योंकि when t is minus 2, its value is 0. So this is 1 point, and when t is minus 1, its value is 1. This is second point. This point and this point lie on this line. So we know the 2 points. If we know the 2 points, we can use the 2-point equation. 2-point equation आपको पता ही है, आपने 12th में पढ़ी हुई है. y minus y1 x minus x1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Okay, this is the 2-point line equation. So using this we can find out what is on the y-axis. Y-axis is xt. What is 9? Let us suppose हम ये वाला point को y1 ले लेते हैं. So when y तो है xt, when t is minus 2, its value is 0, so we can write it as this. And x की जगह क्या लिखना पड़ेगा? t, क्योंकि यहाँ पे t है और यहाँ पर xt. So t minus 2, which will be plus 2, will be equal to ये वाला point ले लेंगे अब. This will be 1 minus 0. y की वैल्यू क्या है? 1 minus 0. ये वाली y minus 0. This 1 and this minus, and minus 1 plus 2. ठीक है, ये वाला point और ये वाला point. So that its slope becomes plus 1 and
equation of line becomes xt equal to, this बनता है xt is equal to t plus 2, t plus 2. Okay, so that when t is 0, its value is 0, and when t is minus 1, its value is 1, so that it is satisfying this. So here we can write t plus 2. So this is how xt is defined. This is how xt is defined mathematically. Now you need to express it in terms of unit step function. Okay, so unit step function मैंने बताया ही आपको, इट इज अ स्विचिंग फंक्शन. तो इसमें भी 4 यूनिट स्टेप फंक्शन हमको लगेंगे. एक तो यूनिट स्टेप फंक्शन इस रीजन में डिफाइन करना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2. एक इस रीजन में डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि -2 to -1. देन इन दिस रीजन यानी -1 to 0 एंड देन 0. तो इसमें हमें डिफाइन करना पड़ेगा. सो लेट अस राइट इट. स्विचिंग फंक्शन ut के रिस्पेक्ट में. सो xt कैन बी रिटन एज, इट इज 0 -2 से नीचे सब 0 है, तो इसे 0 0 को लिखने की जरूरत नहीं. t plus 2 है ये, t plus 2 is in between when ut starts from -2. तो ut starts from -2, तो इसको लिखेंगे t plus 2. Okay, as per the definition of step solution, and it's die out at t minus 1, यानी कि t plus 1. तो ये वाला रीजन हो जाएगा, ये वाला -2 to -1 हमने xt की वैल्यू डिफाइन कर ली. देन -1 to 0 क्या है, 1. इसकी वैल्यू है 1, कांस्टेंट 1. तो इसको हमें लिखना पड़ेगा प्लस 1. कहाँ से कहाँ तक, u of t plus 1 to, अब ये कहाँ पे डाई आउट हो रहा है, ये यहाँ से उठना शुरू किया, यहाँ से उठा, फिर 0 पे डाई आउट हो गया, यानी ut पे हमें इसको नीचे लाना पड़ेगा, ut पे हमें नीचे लाना पड़ेगा, यानी कि ut पे माइनस करना पड़ेगा. सो xt कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस और दिस इन टर्म्स ऑफ ut. इसे और सिंप्लीफाई करना हो तो इसको इकट्ठे कर लो कोफिशिएंट्स, जैसे कि u ऑफ t plus 2 का क्या कोफिशिएंट आएगा, t plus 2 u of t plus 2. ओके, और इसका कोफिशिएंट आएगा, इसको इससे कंबाइन कर लो, यानी कि t plus 1, क्योंकि t plus 2 यहाँ से, सॉरी माइनस का आएगा ना, माइनस माइनस का t आ जाएगा, क्योंकि इसको इससे जब सम करेंगे तो 1 और इसका 2, 1 और 2, तो -1. इसको ऐसे t plus 2 माइनस का, t plus 2 माइनस का, प्लस 2 माइनस का, यानी ये हो गया, ठीक है, ये माइनस का हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा +1 u ऑफ t plus 1 माइनस 2. ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, -t -1. So you can express this thing like this also. Okay. Next was to plot it in SciLAB. Let us do that also. So plotting it will be done on cloud SciLAB. SciLAB आपके पास अगर नहीं है इंस्टॉल, तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग भी कर सकते हो. क्लाउड SciLAB पे जाके छोटी इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. So t, let us define t to be varying from g
-2 in the steps of 0.01 to, let us say, 4. Okay, t is defined. Then we define xt as what is xt? t plus 2 अभी हमने ड्राइव किया है, and into its value is t plus 2 when t is between -2 and -1, तो इसकी वैल्यू है t plus 1 2. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? when -2 is greater than equal to t and t is less than when t is less than -2, less than equal to t. Okay, and its value is 1 dot product ले लिया, यानी डॉट इंटू स्टार. फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन देंगे when t is between -1 equal to t and तो इससे हमें पता चला -2 और -1 के बीच में इसकी वैल्यू है t plus 2 and its value is 1 when it is between -1 and 0. So logical expression से हम इसे लिखेंगे SciLAB console में. So xt is t plus equal to t plus 2 when t is greater than or equal to -2 and when t is less than -1. ठीक है, and its value becomes 1 when t is greater than or equal to -1 and when t is less than 0, less than or equal to 0. Okay, ये हमने xt का एक्सप्रेशन लिख दिया by using this definition. Okay, 0 तो 0 है, 0 को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. By default it will take that as 0. Plot 2 करेंगे कंटिन्यूस टाइम डोमेन में t and xt. इसको हमने एग्जीक्यूट किया. एग्जीक्यूट यहाँ जाके करते हैं, नीचे इसकी बटन है एग्जीक्यूट, यहाँ पे ये बटन है एग्जीक्यूट किया, इसके कॉलम्स आ जाएंगे और ये आपके पास प्लॉट आ जाएगा SciLAB, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, यहाँ से ये डाउनलोड हो गया आपके डेस्कटॉप पे. ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो और इसको टाइटल वगैरह तो आपको देना आती है, टाइटल देना. सो दिस इज हाउ वी कैन प्रोसेस. देखिए -2 से 1 तक ये स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद -1 to 0 1 है, जैसा कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन प्लॉट एनी सिग्नल, डिफाइन एनी सिग्नल बाय यूजिंग लाइन. सिग्नल है तो लाइन मेथड से करेंगे, एंड इसको हम यूनिट स्टेप सिग्नल्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एनी सिग्नल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल. ओके, एंड देन वी कैन परफॉर्म द SciLAB simulation using that. Okay, you can do this thing in the SciLAB cloud. cloud SciLAB.in पे जाके भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट अपने मोबाइल पे भी कर सकते हो और अपने डेस्कटॉप पे कर सकते हो, even though you don't have any SciLAB package installed on your laptop or your mobiles. Okay, you can express